SS law. Today we will discuss about the problem based on SS law. What is SS law? The enthalpy change during a chemical reaction is said whether it takes place in one step or in several steps. So this is the basic idea about the SS law. So this pattern, what are the patterns of problems he will ask, that is I will explain. And what is the tricks behind it? What is the tricks behind it? We will explain this. Clear? So calculate the enthalpy of formation of acetic acid from the following data. We have to calculate the enthalpy of formation of acetic acid from the following data. So what is the acetic acid? So first we required equation to get the required equation to get the enthalpy of formation of acetic acid is the required equation to get the required equation for the formation. The required equation to get the enthalpy of formation of acetic acid is to get so first you will write the required equation to get the enthalpy of formation of acetic acid is this one. First you will write right side acetic acid. So how much carbon? 2 carbon, 2C plus how much hydrogen? 4 hydrogen, 2H2 plus 4. So here ask the question, calculate the enthalpy of formation of acetic acid from the following data. Calculate the enthalpy of formation of acetic acid from the following data. So acetic acid formula is CH3SO8. We have to calculate the enthalpy of this. Enthalpy में क्या? So how can you calculate the enthalpy from these three equations? So the three equation is given. So our problem is what the operation you have to do. कौन operation करियो? जहाँ बोले कि तीनटा equation देखो, एक equation में तो पाई. So that enthalpy जल्दी calculate. So इधर direct step, एक तीनटा कौन? Indirect step. एक तीनटा कौन? Indirect step. So either the direct step, either the indirect step. From तीनटा indirect step रो तुम्हें एक equation ना कितनी पाएगा? That is the problem. So how can we get it? So look at what is the operation you have to do in these three equations so that you will get this equation. It is the problem only. So because this delta you have to calculate. Because a delta में काढ़िया value a तीनटा delta और a तीनटा equation. बर्तन a this equation ना में कितनी पाएगा? a तीनटा equation. That is the problem. So what operation we have to do so that we will get this equation from these three equations. बर्तन एटी केतना अछि 2c अछि ए इक्वेशन 1 ने कोन करियो 2 गुण दबा 2c गेला इक्वेशन 1 ने 2 गुणियो माने सबुतरे 2 गुणियो इन डेलिज भी 2 गुणियो तापरे एटा 2h2 अछि इक्वेशन 2 रे कोन करिया 2 गुण दबा 2 गुण दबा हैला 2 गुणी दे कोन कले माइनस इक्वेशन 3 कर दो दला ए इक्वेशन ना देखिलो मल्टीप्लाई ए इक्वेशन ना में तीनटा इक्वेशन को कोन कले ए इक्वेशन ना पाए. दिस इज द प्रॉब्लम. हाउ कैन वी गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशन? दैट इज द प्रॉब्लम. व्हाट आर द ऑपरेशन वी हैव टू डू सो दैट वी विल गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशन? So first here 2c, so we have to multiply 2 in this equation, and here 2h2 we have to multiply 2 in this equation, plus over we have to subtract this equation third. So what is the operation? Multiply equation 1 into 2, either multiplying equation 1 into कितने 2 plus equation 2 into 2 minus
equation this is the operation. So you have to multiply equation 1 into 2. So it into what like this, 2c plus 2o2 2co2 2c plus 2o2 2co2 del h 2 गुण फिर 2 गुण देता है how much minus कितना है ठीक है कितना है कितनी ऑप्शन लिख लो क्रिसमस next multiply equation 1 into 2 then equation 2 you have to multiply 2 that will be 2h2 plus 2 cancel O2 this gives 2h2 del h will be कितना अच्छी कैलकुलेट करो 275 into 275 कितना है कितना minus 550 kilo this was then ये क्या करें multiply equation 1 into 2 equation 1 into 2 plus equation 2 into 2 minus equation कितने हाँ minus equation हाँ so equation तक ऐड कर दिया if you add this that will give what 2c plus 2h2 plus 3o2 এটা কত হবে 2co2 2h2 del h add this how much value will come कितना है कितनी ऑप्शन निकलो कितनी ऑप्शन है so that is equal to minus 1310.8 minus 1310.8 so what is the operation look at equation 1 into 2 plus equation 2 into कितने 2 minus equation third we have to multiply minus equation third so minus equation third is CH3 COH plus 2O2 2CO2 plus 2H2O del H is minus 876.6 kilojoule. So minus and it will be how much plus look at so this cancel this cancel এটা কত আসলো এই 3O2 3O2 minus 2O2 কত আসলো এটা আসলো 2C plus 2H2 plus O2 look at it will be minus the right side पे चलिए let's it will convert it to right side so this will be plus so this will be del h will be how much calculate minus of this plus this how much that is minus 1310.8 plus 876.6 calculate this
434.2 minus 434.2 kilojoule. This much, I think, approximate result. Hello. So look at in this pattern of question. First, what you have to do? You have to write the required desired equation to get the enthalpy of formation of acetic acid is this much. First, so you calculate the formation of acetic acid. First, right side you write the acetic acid. Then how much carbon? 2 carbon, 2C. How much hydrogen? 4, 2H2. 4 hydrogen. तुम कहबो एटा कार्बन दा 2C और C2 लिखता है तुम ए इक्वेशन को देख करियो को फॉर्म रे अछि एटी कार्बन पडुची गुटा अछि तन केते कार्बन एटा 2C तन 2C देन हाइड्रोजन इज व्हिच फॉर्म H2 so you will write H2 into 2 H2 into 2 then oxygen is given O2 form so this is O2. This is the required equation. Then we have to calculate this delta. So how can we calculate from this three equation this equation? This is the problem. A required equation ना हमें कोले करीबा कोटू ए तीनटा equation. कोटू ए तीनटा equation. So तीनटा equation केंद्र करीबा देखो तार ट्रिक्स होची तुम्हें जे required desired equation लिख दबो केतना कार्बन अछि दुईटा तनो 80 मल्टीप्लाई करियो त 2 एटी केतना हाइड्रोजन अछि दुईटा एटी मिलियो 2 तापर माइनस करबो एटा. So ए ऑपरेशन को तुम चेक करियो मैथमेटिकली किंतु करियो दैट इज द प्रॉब्लम. सो एटी 2C अछि 2 गुणि दलो एटी हाइड्रोजन अछि एटी गुटा हाइड्रोजन 2 गुणि दलो ताको ऐड कर दबो माइनस कर दबो. So multiply equation 1 into 2 plus equation 2 into 2 minus equation 3 that will give this equation. So 2C एटी 2 गुणि दलो 2C 2H2 4 2 2CO2 del H भी 2 गुणि 4 ले 2 गुणि दलो तापर केते आसला 2H2 H2 रे केते 2 गुणि दलो 2 एटी कटि गला केते रहला खाली O2 तापर एटा केते 2H2 तापर del H भी 2 गुणि दलो एति आसला बता मैं एति देखो ए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 into 2 plus इक्वेशन 2 into 2 एटा सरी गला तापर ऐड कर दे एटा उडा इक्वेशन पाइलो एति पार्ट दिस इज एति पार्ट तापर केते हो -3 माने this equation minus this equation minus this equation माइनस कर देखो ए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ए इक्वेशन हमें एटा वाला हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ए रिक्वायर्ड इक्वेशन आसले के आसला रिक्वायर्ड इक्वेशन आसला तारो रिक्वायर्ड इक्वेशन रो डायलिस काम दरकार रिक्वायर्ड इक्वेशन रो डायलिस दरकार बताने आप डायलिस बेसिल एटा ला प्रॉब्लम दिस इज द प्रॉब्लम. सो ही विल पुट द क्वेश्चन what is the calculate the enthalpy of formation of acetic acid from this following data. ए डाटा का देई दिबो तुमे काढिबो कोटा तार enthalpy टा काढिबो जानिला. So this is the pattern of problem he will ask in Hess's law. This is the pattern of problem he will ask in the Hess's law. Clear? Next question. जानियो ना न जानि पला कि जानि पला जानि होछि तो जानि होछि. नेक्स्ट क्वेश्चन आउडा mo लिखुछि क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 कैलकुलेट द question. Calculate the enthalpy of formation of calculate the enthalpy of formation of CH4 from the following data.
केते -393.7 किलो जूल आउट देजी H2 प्लस -285.7 CH4 CO2 gas C plus O2 CO2 del H minus 393.7 H2 plus half O2 H2O liquid minus 285.7 तापरे CH4 gas plus 2O2 CO2 gas plus 2H2O liquid del H minus 890.3 answer. The required equation for the formation of CH4 is the required equation for the formation of CH4 is केते आसीबो देखो CH4 एटा डायरेक्ट करियो केते कार्बन हाउ मच कार्बन 1 so 1 C solid plus 2 H2 gas. This will be required equation. So how can you get this equation from these three equations? That is the problem. What is the operation you have to do so that you will get this equation from these three equations? ए तीनटा इक्वेशन को कौन बोले तुम्हें ए इक्वेशन का पाइबो. That is the problem. That is the problem. कौन कले तुम्हें पाइबो देखो कौन कले कौन ऑपरेशन कले तुम्हें ए तीनटा इक्वेशन का पाइबो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर. You have to do this mathematical operation so that you will get this equation from these three equations. Look at here how much carbon 1 एठी को बनिबा किछ दरकार नै एठी केतना हाइड्रोजन अछि 2 2H2 एठी केतना अछि खाली H2 तो एटा 2 so equation 1 plus equation 2 into 2 minus equation 3 clear. So or otherwise लिख परियो multiplying equation 2 into multiplying equation 2 into केते 2 plus equation 1 minus equation 3 clear. So एटा 2 गुणिबो एटा सहित एटा ऐड करिवो बता एटा इक्वेशन केते आसला C solid plus O2 gas CO2 gas that is how much minus 393.7 kilojoule तापर एटा केते गुणिबो 2 गुणिबो 2H2 2
2H2 plus O2, 2H2 plus O2 कहीं 82 मिले 2 2 कटिया 2 4 2 this gives H2O liquid. बैलेंस करते हैं CO2 गुणे लगाते हैं CO2 गुणा क्या लगाते हैं उससे कितना CO कितना उससे देखा यदि देखला उससे this much बताएं मल्टीप्लाइंग करो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 into 2 plus इक्वेशन 1 এটা 2 গুণে এটা ইকুয়েশন 1 ऐड कर दियो ऐड दिस ऐड करले कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 प्लस 2O2 2O2 এটা তো कहते हैं CO2 gas plus ऐड करो C solid plus 2H2 plus 2O2 CO2 plus H2O. Then it's final product. कितना से ऐड करेंगे 7 से 11 में कम एक कम एक 2 3 2 5 2 सच्चे अबे कम लाइक कम clear ketika sudah kasih value this kilojoule minus কোটা কইলে কেডা আছে this equation তারপরে মাইনাস কোটা করলে থার্ডটা তারপরে মাইনাস কোটা হবে ইকুয়েশন থার্ড কোন আছে CH4 plus 2O2 gives rise to CO2 gas plus अरे ना छाड़ी दीजिए 2H2 होगा 2H2 होगा ना 2H2 delete is delete minus 89.3 kilo এটা মাইনাস করো মাইনাস প্লাস so this cancel এটা রইলা এটা কত গেল রইলা কত C solid plus 2H2 এই যে CH4 টা মাইনাস যেহেতু আছে এটা মাইনাসটা আর রাইট সাইড মাইনাস উইল গো রাইট সাইড so CH4 del H equal to
del H equal to how much calculate करो केते calculate करो एटा this plus this एटा केते आसीबो minus 0.1 plus एति केते calculate minus 74.8 of signal minus 74.8 of sig समझ छी এটা কত 70 केते जा कैलकुलेशन करले जति आसीबो एटा जा आसीबो कैलकुलेट करिवो हैला एटा प्लस दिस करले जा आसीबो सेटा ला का डेलेज आर डेलेज एई जो वैल्यू आसीबो दैट x वैल्यू will be the delige of this so एई वाला प्रॉब्लम देथिले फास्ट कोन करिवो कैलकुलेट द एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ CH for the required equation for the formation of CH for the required equation for the formation of CH for is this आगे लिख दो CH पर कितना कार्बन गोटे कार्बन लेफ्ट साइड गोटे कार्बन कितना हाइड्रोजन चारटा 2H2 एई जो डेलेजटा काढी दबो बर्तन एई डेलेजटा काढियो we have to calculate this delage so एई जो डेलेजटा काढियो करबो कितना कार्बन गोटे कार्बन एठी एई इक्वेशन को ऐड करले एटा लिख दो तापर एई इक्वेशन में कितना अछि गोटे हाइड्रोजन data sorry H2 अछि एटी केतना अछि 2H2 so you have to multiply here 2 so multiply equation 2 into 2 plus equation 1 minus equation 3 so equation ए 2 रे 2 गुणी माने होल रे 2 गुणी तापर equation 2 गुणी plus equation 1 minus equation 3 एटा फर्स्ट एटी equation 2 गुणी एटी 2 गुणी ना एटी तो किसी गुणी नहीं 1 गुणी भी चलियो किसी 1 तो 1 हो कोन ए दिकरा इक्वेशन को ऐड करो तापर माइनस दिस इक्वेशन माइनस इक्वेशन if you minus this then you will get this value so this value you have to calculate ja asbe ta calculate karibo whatever the value this value will be this clear next question calculate the enthalpy of formation of calculate the enthalpy of formation of calculate the enthalpy of formation of ethyl alcohol from the following data calculate the enthalpy of formation of ethyl alcohol from the following data देछि C2H5OH plus 3O2 C2H5OH plus 3O2 gas एटा बुझी कते 2CO2 plus 2CO2 gas 2H2O liquid डेलेज देछि कते डेलेज देछि minus
1368.2 किलोजूल। सेकंड में C solid plus O2, minus third with H2 minus 286.6 minus 31368.2 minus 393 minus 286.6। बता लगा calculate the enthalpy of formation of ethyl alcohol from the following data। So the required equation or desired equation for the formation of ethyl alcohol, the required equation or desired equation for the formation of ethyl alcohol is ethyl alcohol ethyl alcohol how much carbon 2C how much hydrogen कितना हाइड्रोजन 6 so 3H2 plus half O2 that will be 1 mole. Half O2 will be 1 mole. Look at 2 carbon 2C, hydrogen will be 6, 3H2, oxygen 1 oxygen, half O2 1 oxygen, half O2 1 oxygen. We have to calculate this del H. We have to calculate this del H from these three equations. Operation कौन करेगा देखो। ऑपरेशन कौन कले हे परिबो निजे चेक कर देखो एटी केते अछि हाउ मच ऑक्सीजन ना हाउ मच कार्बन 2 सो एटे केते बनिबो 2 एटे केते अछि 3H2 एटे बनिबो केते 3 माइनस इक्वेशन 1 माइनस मु ऑपरेशन लिख दोछि निजे यू हैव टू सॉल्व इट ऑफ योर ओन multiplying equation 2 into 2 plus equation 3 into 3 minus equation 1 equation 2 into 2 plus equation 3 into 3 minus equation 1. So next solve it. Next solve this question. Try to solve. You can solve it. You can solve this question. So try to solve it. Two C plus 2O2 gives rise to 2CO2
Del H is how much? Minus 6 2 9 18 8 9 2 3 6 7 हाँ 786 then 3H2 plus 3/2 O2 3/2 O2 कहीं आसीबो 3/2 3/2 एडी जे हाफ अछि मल्टीप्लाई 3/2 O2 3/2 O2 एटा केते हो 3H2O liquid del H will be common del H will be how much calculate करो केते आछि 3 गुणा 3 will be how much minus 859.8 आछि लिखो minus 859.8 एटी आछि चेक करो 3 गुणा minus 286.6 into 3 318 नेला 1 318 19 1 324 25 5 2 हां ठीक আছে माइनस 859.8 minus 859.8 बटन look at multiply equation 2 into 2 plus equation 3 into 3 minus how much equation 1 minus equation 1 so first in the add करो this will be how much 2C plus 3H2 this will be half how much O2 3/2 plus 2 कितना है 3/2 plus 2 7/2 O2 gives rise to how much 2CO2 plus 3H2O एटी डलेज कहते हैं डलेज should be how much 10 माइनस केते आसीबो एटा प्लस हे जिवो हां प्लस हो काई कहलो ए दिटा परा ऐड करूछ माने केते आस कैलकुलेट कर केते आस 16 minus 1645.8 बस very good so this is the value so multiply this is up to how much multiply equation 2 into 2 plus equation 3 into 3 minus you have to do what minus equation 1 minus equation 1 is this one so you have to write C2H5OH C2H5OH plus 3O2 gives rise to 2CO2 plus 2H2 এটা কত আসবে minus 1368.2 kilojoule so you have to subtract minus
टोटल को छाड़ देंगे এটা 2C 3H2 3H2 2C গলা এটা ঠিক আছে এটা भी 7/2 minus 3/2 কেটে আসছে করে দেখলাম 7/2 minus 3O2 হাফ আসছে হ্যাঁ 7/2O2 minus কেটে 3O2 7/2 minus 3 2 গলা 7 minus হাফ O2 এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে 2CO2 তে কটি দিব 3H2O 2H2 হয়ে গেল 3H2O এটা এই যে क्वेश्चन है এটা देखो क्वेश्चन में এটা 3H2 कर दे बेटर 3H2 নরস এটা কটি বলি এটা 3H2 এটা 3H2 সরি क्वेश्चन में ভুল হচ্ছে ହେଲା সেটা 3H2 ହେଲା সো 3H2 হলে প্রথম দেখো এইটা এটা কটি গলা এইটা একটু কোন হলো কটি গলা বাকি এটা মাইনাস করলে কত আসবে 2C সলিড প্লাস এটা কত আসবে 3 2C সলিড 3H2 plus 7/2O2 plus 7/2 minus कते 3/2 এটা কত আসবে হাফ O2 এটা কোন হবে C2 as 5OH इनका लेस करते हैं डालेज पता रखना ये प्लस कैलकुलेट कर कितना है माइनस 277.6 अच्छी माइनस 277.6 किलोमीटर चेक करो फर्स्ट record the required equation required equation for the formation of ethyl alcohol first ethyl alcohol CH5 लिख दो r रिलीज करियो केतना कार्बन दुईटा 2C हावा हाइड्रोजन 6टा 3H2 केतना ऑक्सीजन गोटे हाफ O2 बताओ এই ইকুয়েশনটা এই তিনটা ইকুয়েশন को কোন অপারেশন করে এই ইকুয়েশন তুমি পাইবে what is the operation you have to done from these three equations so that you will get this desired equation so multiply इक्वेशन ए इक्वेशन 2 रे 2 गुणिबो आ इक्वेशन 3 रे 3 गुणिबो ताको ऐड करिबो माइनस इक्वेशन 1 सो इट 2 गुणिला देन इसे भी 2 गुणिला तापर एक 3 गुणिला देन इसे भी 3 गुणिला तापर सीधीटा को ऐड कर दो एटा ऐड आसीला माइनस दिस इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 करके माइनस कर दो देन इज बोलो आसीला ए जो देन इसका दिस इज दिस देन तो दिस देन इज माइनस 277.6 किलोजूल so this is the এটা লা কোন ইনডাইরেক্ট মেথড রে করবে এটা কোন মেথড রে করবে ইনডাইরেক্ট মেথড so এটা ডাইরেক্টলি কাটি হবে না এই তিনটা ইকুয়েশন को কোন অপারেশন করলে এই ইকুয়েশন পাইবো তাহলে এই ইকুয়েশন পাইবো বিকজ অ্যাকর্ডিং টু হেসেস ল enthalpy change during the chemical reaction is same whether it takes place in one step এটা one step রে এটা লা indirect তিনটা step so enthalpy change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or in several steps तो एटा गोटा स्टेप रे पाइले काई डायरेक्टली काढी रे इनडायरेक्ट काढी की से बोलता पाइलो दैट इज हेसेस law the enthalpy change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or in several steps enthalpy जैसे कोई जो गोटा स्टेप रे चेंज करे जेती वैल्यू आरियो तीनटा स्टेप रे चेंज करे सेती वैल्यू आरियो क्लियर so the enthalpy change during a chemical reaction is same whether it takes place in one step or in several steps next question the home task
calculate the, write down, এটা home task, তুমি লিখি দিও calculate the enthalpy of formation of glucose. Calculate the enthalpy of formation of glucose from the following data. Calculate the enthalpy of formation of glucose from the following data. First bit, C plus O2 CO2 gas, এটা তো হচ্ছে del H minus 395.0 kilojoule. This is first. Second is H2 plus half O2. H2 plus half O2, এটা তবে H2O liquid. Del H দিয়েছি minus 269 per kilojoule. Third bit is 6C solid plus 6H2O. 6H2 gas plus 3O2 gas. 3O2 gas gives rise to C6 H12O6. Del H is minus 1109.5 kilojoule. Now I am writing the required equation and operation. After that you will solve it. The required equation or desired equation. The required equation or desired equation for the formation of the required equation or desired equation for the formation of glucose is glucose formula C6H12O6. So this will be how much? 6. Eta question na work korbe. Calculate the enthalpy of formation of glucose from the following data. The required equation এটা formation এটা দেখো calculate the এটা को कर दियो combustion of glucose enthalpy of এটা कर दियो ये क्वेश्चन में calculate the heat of combustion. Calculate the heat of combustion of glucose. Calculate the heat of combustion of glucose from the following data. It is combustion of glucose. So the required equation is C6H12O6 6O2. 6O2 এটা দেব 6CO2 6H2O liquid R del H কাটিব
बता कौन ऑपरेशन करियो देखो गाइस ऑपरेशन हिंट्स दे दो जे यू टू सॉल्व दिस ऑपरेशन का कौन करियो तो इक्वेशन टा पाइबो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हाट यू हैव टू डू इक्वेशन 1 ने कौन करियो 6 86 CO2 अछि 86 गुणिबो H2 केते अछि गोटे अछि सो 86 गुणिबो 18 केते गुणिबो 6 गुणिबो तापर कोन करियो सबट्रैक्ट कर दो तापर कोन करियो सबट्रैक्ट कर दो सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 into 6 plus 6 into 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 into 6 plus equation 2 into 6 minus equation 3 then you will get this value. So the operation is multiplying equation 1 into 6 plus kade equation 2 into 6 minus equation 3 so that you will get this value clear bas answer tam koi dechi -28 eta achi -2816.6 kilojoule এটা চেক করো you will calculate this value this is home task this question is home task so operation is multiplying equation 1 into 6 plus 6 into 2 1 रे 6 गुणिबो 2 रे 6 गुणिबो minus equation 3 so then you will get this value clear thank you